Okay. Good morning, my dear students. Today we'll discuss some important topic of determinant, and this topic is the properties of a determinant. Properties of a determinant. That means what are the property that we can use in a determinant, and that is the students. The first properties number first. First properties is given that if any row or column of a determinant are intersections, then the numerical value remain unchanged. That means if we intersect the row to column or column to row, the numerical value of a determinant remain unchanged. Very important. That means if A is the determinant, if A is the matrix, suppose it is the matrix 1, 2, 3, 4. If I find the determinant, then I get 4 minus 6 equal to minus 2. If I interchange this matrix, if I interchange row to column, and suppose it is a B matrix, I interchange row to column or column to row, then what happen? 1, 2, 3, 4. I interchange row to column and column to row. Look here, it was the row and it is the column. So just I interchange. So I just find the value, then I get 4 minus 6 also minus 2. So in both the cases the value remain unchanged. That means in any determinant, if I find the determinant, value of the determinant, row or column, if I interchange the row or column, then the value of the determinant remain unchanged, and that is the properties number first. That means the first properties, it is given that if I find the value of the determinant and if I interchange the row to column, then both the cases are remain unchanged, and that is the properties of the determinant first. Okay, my students, I think you understand. That means the first property says that if I find the determinant and after transpose this determinant, transpose means row to column, column to row, both the cases are same. Suppose the determinant, value of determinant, and after transpose both the value are same. Both numerical value, the determinant are remain unchanged. Suppose it is a determinant and it is the determinant, but it is the transpose determinant. Transpose means row to column, column to row. If I interchange, then I said it or also that both the value are remain unchanged, and that is the first properties of a determinant. Next, it is the first property. Again, second property. Property number second. If any two row or column of a determinant are interchanged, then the sign will be the same. If any two row or column of a determinant are interchanged, then value of determinant will be sign change. It is the first property, number first. My students, look here. If any two row or column of a determinant are interchanged, then the value will be the sign change. Suppose it is the determinant
Suppose I have to find the determinant of the matrix 1 2 3 minus 1 0 1 next 2 3 1. Suppose I have to find the value of this determinant. If I expand this for any row, then I get, suppose for this row, for this one, then this number and this number cancel. You have how much? These two numbers remain. I cross multiplication, I get 0 minus 3, next minus 2. For these numbers I get minus 1, minus 2, again 3. For this 3, this one column cancel, minus 3, 0. Then I get minus 3 and plus 6 and minus 9. So I already get here minus 6. So my students, if I find the determinants, then I get how much? Minus 6. If I want to find, if I interchange the matrix, if I interchange for any two row or column, suppose this column come this side and this column come this side. That means if I interchange any two row and column, then I get a matrix. Then I get the determinant. This column and this column are interchanged. Then I get 3 1 1 1 minus 1 2 and 2 0 3. Just I interchange this. This number come this side and this number come this side and this one are remain same. So in these cases, what is the value of these determinants? I can just find. Now, if I expand this determinant, look here. For this 3, this row and this column cancel. So we have how much? These two numbers 0 plus 3. Again. For minus 2, it is the plus, but according to the formula, you have to write that minus 2. So for these numbers, if I expand, then this row and this column are cancel. You have 2 plus 1, then minus 1, plus 1 for these numbers. This row and column cancel. So you have only this 4, so 3 minus 0. If I expand 9 minus 3 and 6 plus 3, so I get how much? 12 minus 6 equal to 6. So in this cases what? I get what? 6. I get what? 6. But in this cases I get what? Minus 6. So look here. If I interchange any row or column, then the value of the determinant remain unchanged. That means sign will be the change. Because in these cases I get what? Minus 6. But in these cases I get what? 6. So I get both the cases I get only sign will be the change. That means for any determinant, if any two, just only two, row or column, other column, if I interchange, then the sign will be the change. That means their sign will be the change. Okay, my students. Suppose if I find the value of this determinant equal to minus 6, if I interchange this row and this column and this column, if I interchange, suppose this number come this side, this number come this side, then sign will be the change. Any column also, any row also you can interchange. Suppose this row come this side and this row come this side, or any two row or column you can interchange. Then the value of the determinant remain change. That means sign only change, no value, only just sign will be the change, and that is the property number second. Next, number third. Properties number third. It is the properties number third. If any two row or column are same or identical, then value of determinant is 0. Very important property. If any two row or column are same or identical, then the value
then the value of the determinant is was 0. किसी भी दो रो नहीं तो कॉलम are same or identical, then in these cases the determinant is equal to how much? 0. Suppose I give some example. Suppose it is the determinant 1 2 3 3 2 3 4 2 3. Look at students, these two column, it is the identical because 2 2 2 3 3 is 3. So these numbers are identical. Okay, in these cases the value of the determinant is how much? 0. आप इसको जब एक्सपांड करोगे देखो इसका तो 0 आएगा. आप जैसे में और एक determinant है, suppose I give another example of determinant. Suppose it is a b c d e c f g c. Look at my students, any two row or column are same. Suppose this row, yes, C. Look here, these two column are same. Here C, here C, here C. Then it is also what? 0. That means any two row or column are identical. This is the identical part, this is the same. Then in these cases the determinant, value of the determinant is how much? 0. It is the main properties of a determinants. Okay, my students? If any two row or column of a determinants, are same or identical, in these cases the value of the determinant is how much? 0. So I think you understand. किसी भी दो रो नहीं तो कॉलम सेम नहीं तो आइडेंटिकल जैसे हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा. सपोज लुक हियर, दिस टू नंबर्स ये आइडेंटिकल हैं और ये आपका सेम टू सेम है, तो दोनों केस में इसका वैल्यू जो है, इसका न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो कितना आएगा? 0 आएगा. ये मेन प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट नंबर 4 प्रॉपर्टी. Number 4 properties is given by, look at number 4. Number 4 property, if all or any row or column of a determinant are expressed as the sum of element, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant. किसी भी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम, रो नहीं तो कॉलम का उस एलिमेंट नहीं तो ऑल एलिमेंट, if you can express as the sum of other elements, then the determinant can be expressed as the two or more determinants. Suppose a determinant is given by a plus lambda b, C plus lambda d, or E plus lambda f, and these elements, other two elements हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, 4 5 6 7, उसमें नंबर है. अब देखते हैं इस नंबर में आपको दो नंबर का सम प्रोडक्ट हो गया, सम है, because these numbers can be expressed as the sum of two elements. देखो दो एलिमेंट का सम है, दो एलिमेंट सम है, ये नंबर है. किसी भी रो नहीं तो कॉलम जैसे इसी फॉर्म में है, आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इज गिवन बाय a, their first element is a, first element is a, and other element numbers 2 5 3 6 and 4 7, and another element is, another determinant is, you can write lambda b, lambda d, or lambda
F and remaining elements just these two numbers. One determinant you have to write like this and another is just you have to write like this. आपको दो डिटरमिनेंट में ऐसे एक्सपांड करोगे. नेक्स्ट एलिमेंट है 2 5, नेक्स्ट 3 6, नेक्स्ट 4 7. ऐसे दो नंबर में आप एक्सपांड कर सकते हैं. किसी भी दो रो नहीं तो कॉलम, किसी भी रो देखिए कॉलम इस फॉर्म में जैसे एक्सपांड कर सकते हैं. जैसे में सम ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स में एक्सपांड कर सकते हैं. देन वो डिटरमिनेंट को दो फॉर्म में आप लिख सकते हैं. दैट मींस इसका वैल्यू इसका वैल्यू दोनों का प्लस करके जो रिजल्ट है वो इसका वैल्यू का इक्वल आएगा. एक में स्टूडेंट्स लोग क्या किसी भी रो नहीं तो कॉलम any two row or column of a determinants if you express as the sum of other elements में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो पूरा डिटरमिनेंट को ये जो पूरा डिटरमिनेंट है इसको कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स. फर्स्ट एलिमेंट a this one and second this one. Again these elements again this can be expressed as again one first determinant is this, second determinant is this. ये जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है इसको एक ब्रैकेट में लगा दीजिए और सेकंड जो नंबर है उसको और एक डिटरमिनेंट. तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट नंबर 8, इट इज द लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटरमिनेंट्स. नंबर 8 डिटरमिनेंट इज गिवन very important properties also. If last properties is given, if constant numbers are multiplied with any row or column and added to row or column, then the value of determinant remain unchanged. That means जैसे मान लीजिए किसी भी एक डिटरमिनेंट है a b c d e f g h i. It is the determinant. Suppose it is a determinant. इस डिटरमिनेंट के किसी भी रो नहीं तो कॉलम के साथ, किसी भी रो नहीं तो कॉलम. Suppose it is the column or it is the row. Any row or column. आप मान लीजिए किसी भी रो नहीं तो कॉलम के साथ किसी भी प्रॉपर्टीज यूज किया. Suppose it is if you use R1. R1 can be written as R1 में आपको ऑपरेशन लगाना है, that is the R1. R1 can be written as R1 plus half of R2. तो भी आपका न्यूमेरिकल जो वैल्यू है remain unchanged. Not only half, any number आप इंटू कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं. लेकिन जिसमें ऑपरेशन लगाओगे, जैसे R1 में ऑपरेशन लगाया तो R1 के साथ इंटू नहीं करना, ये R1 के साथ इंटू नहीं करना, ये किसके साथ करोगे, कोई और दूसरा रो नहीं तो कॉलम के साथ इंटू करोगे. लेकिन एक बात सुनो बेटा, जैसे R1 में ऑपरेशन लगा दिया तो आप यहाँ पे R1 लिखोगे. जैसे मान लीजिए R2 में लिखा तो R2 कैन बी रिटन एज, इसका ऐसे लिखना होता है, R2 कैन बी रिटन एज R2 plus 3R1. जब भी सबसे तो R1 नहीं तो R3 में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं. इट कैन बी ऑल्सो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो रिमेन अनचेंज. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलम में भी लगा सकते हैं. सपोज R1 कॉलम एंड दिस कॉलम कैन बी रिटन एज 5 into C2 और C3. इसमें कुछ भी नंबर आप इंटू कर सकते हैं. तो भी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है इसका जो डिटरमिनेंट का पहले का वैल्यू है और ऑपरेशन इसको दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू है दोनों वैल्यू आपका क्या होगा, रिमेन अनचेंज. दैट मींस आपका सेम टू सेम आता है. ओके माय स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट लास्ट और एक प्रॉपर्टी है आपकी, ये प्रॉपर्टी लुक एट दिस प्रॉपर्टीज अगेन वन टाइम्स.
एनी डिटरमिनेंट्स, किसी भी डिटरमिनेंट का ऑपरेशन जो लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशंस। सपोज इफ यू वांट टू ऑपरेट द C1, C1 में ऑपरेशन लगाना है तो C1 plus 5C2 और C2 can be written as C1 plus 3 or 4 5 minus any minus plus any C if it is C2 then you have to write a C2, if it was C1 then you have to write a C1 or R1 R1 R2 R2 सेम टू सेम होना चाहिए। बट ये आप C2 में लगाया तो यहाँ पे C1 लिखोगे नहीं तो C3 लिखोगे, आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रिमेन अनचेंज्ड एंड दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ए डिटरमिनेंट्स। लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, इट इज द लास्ट प्रॉपर्टी। If constant numbers are multiplied with any row or column, then value of determinant is multiplied by that constant. Suppose it is given, suppose it is the matrix A, B, C, E और ये F। Suppose it is a determinant, ये आपका डिटरमिनेंट है, वो भी किसी भी रो नहीं तो कॉलम के साथ ऑपरेशन लगाओगे। सपोज आप लगा दिया R1 ऑपरेटेड K into R1, जैसा R1 के साथ K into किया जिसमें ऑपरेशन लगाया, देखिए फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट में ऑपरेशन इनटू K किया तो K से डिवाइड भी करना होगा, दैट मींस 1 upon K। तो आप क्या करोगे रो 1 रो 2 रो 3 नहीं तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जस्ट एनी वन यू कैन हैव टू मल्टीप्लाई। इफ यू मल्टीप्लाई देन यू हैव टू डिवाइड, जैसा मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा। अगेन दिस नंबर मल्टीप्लाई, सपोज दिस you want to multiply, then R1 KA KB or KC, next D E F G H I। If you multiply any one row or column, then the below the determinant is also multiplied by K। किसी भी रो, जैसे मैं इसमें कॉलम में लगा दिया, सॉरी रो में लगा दिया, कॉलम में भी लगा सकते हैं, कॉलम से ऐसा होगा तो भी आपने ये जैसे इनटू किया तो डिवाइड भी करोगे। ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर मल्टीप्लाइड देन इट शुड बी आल्सो डिवाइड, ओके, बिकॉज़ यू मल्टीप्लाई दिस वन। बट इन दिस केसेस लुक एट, हम जो नंबर की प्रॉपर्टीज लगाया R1 में, जैसे R1 प्लस K into R3 लगाया तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें। आपने इसी केस में नो नीड टू मल्टीप्लाई, बट इन दिस केसेस यू टू मल्टीप्लाई बिकॉज़ जिसमें ऑपरेशन लगाया उसी में इनटू किया, उसी में डिवाइड किया तो आपको करना होगा। बट इन दिस केसेस R1 में ऑपरेशन लगाया देखो R1 को कुछ नहीं किया, R2 और R3 को किया तो उसी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी केस में आपको इनटू किया तो डिवाइड भी करोगे। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।